चलो keep reading. Alternating current. Alternating current. So you know the difference between direct current and alternate current. So what is the difference between alternating current and direct current? Tell me. Direct current बोले तो direct current is, it is called unidirectional current, one direction current. Okay, and do not change its direction. Okay, tell me, suppose I given current versus time graph. Okay, so I'm giving like this. AC or DC? AC or DC? DC. Okay, you tell me, Sadik. AC or DC? Bolo. Okay, this is DC only. Okay, why? Because it is only in one direction. It is not going negative cycle, either positive, but variable DC है. इसको variable DC बोलते हैं. Okay, it can be any shape में देने दो. But if it is only in one direction, current versus time, only in one direction, it is nothing but the DC current. Okay. Now, and famous one is this one, right? Current versus time. This is a DC, constant DC. Okay. Covered. Now we'll see alternating current क्या है. Alternate current means इसका one direction current नहीं रहेगा, two direction रहेगा, positive negative. That is called alternating current. So we'll take the examples. Alternate current changes its direction. So famous one is sinusoidal wave, current versus time. Like this. Positive negative. These are all AC, changes direction. Okay. Now tell me which is more dangerous, AC or DC, and why? मतलब डीसी से फ्रॉम वेयर इट इज सोर्स किधर से आएगा? डीसी सोर्स इज बैटरीज, डीसी बैटरीज. एसी तो नॉर्मल हमारा सबस्टेशंस वगैरह से आएगा. विच इज डेंजरस? बोलो. हाँ श्रीराम, यू कैन आल्सो टेल. यू हैव ऑप्शन राइट देयर, बटन प्रेस करके कर सकते हो. सो डीसी. व्हिच वन? डीसी. ओके, यू शिवांगी? AC probably. ओके, हाँ सात्विक टेल. सर एसी है. ओके, देखो, एनी टाइम यू गॉट शॉक आया. ओके, सी इन एसीज और होम में, घर में जो आ रहा है ना, दैट इज एसी. ओके, सपोज यू गॉट ए शॉक हियर, you'll get shock. Either there is a chance to remove your hand from your hand. Agar if you like that shock, again if you don't remove your hand, again shock. Either chance है. Okay, but DC में कैसे देखो, टाटा बाय बाय बोलते ना, ये वाला, ये कंटिन्यूअस में होता जाएगा, मरने तक इट विल नॉट लीव. एंड एक्चुअली बैटरी से अच्छा आपको फील होने के लिए, रेलवे ट्रैक में ट्रांसमिशन लाइन्स होगा ना ऊपर, दोज आर डीसी. आपको उधर पकड़ेगा ना, कलर सीगा मरने, कलम बॉडी आएगा दर से, तब तक नहीं छोड़ेगा. वेरी डेंजरस है ये वाला. एसी घर में आएगा जनरली. इसका बहुत सारा एडवांटेजेस आर देयर, बट डीसी इज समवट डेंजरस. ओके, नेक्स्ट. नाउ विल टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू. बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एसी का सिंबल कैसा रहेगा मालूम है? AC source symbol is like this. This is AC source. Plus minus. This is AC source का symbol है. Okay. And DC source का we know this one, right? This is a DC source. Till now we are used at this one. This is a DC source. And current is coming like this. But AC में आपको current एक बार इस तरफ जाएगा, एक बार इस तरफ जाएगा. आप चेंज होता जाएगा ना. So but at the instant में we assume the current is like this. At that instant maybe if I take a photograph, the current is like this. Okay, so this is the AC source का भी से ऐसा यूज करेंगे AC source का. वेरी इजी चैप्टर, नाइस चैप्टर, बट एक बार बीच में नहीं आया तो कलर्स गएगा हमसे, नहीं समझ में नहीं आएगा. ओके, चलो हो गया. नेक्स्ट,
Now we'll talk about average values and RMS values we have to learn. Okay. Okay. ठीक है. So first average value को I average बोलते हैं, और I बार से भी रिप्रेजेंट करेंगे, और I लेस देन ग्रेटर देन वाला भी रिप्रेजेंट करेंगे. ऑल आर सेम, डिफरेंट बुक्स में एक सिंबल रहेगा I average वैल्यू. ओके. I average बेसिक फॉर्मूला क्या है, वी विल सी. I average का फॉर्मूला याद है? I average का फॉर्मूला इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में rate of flow of charge, right? So delta Q by delta T. This is I average value. Now I'm interested to calculate I average value. उसके लिए आपको डेल्टा Q चाहिए. ओके, डेल्टा Q चाहिए. मैं किधर से लेके आऊंगा? देखो, we know I instantaneous का फॉर्मूला है dq by dt. मुझे चार्ज चाहिए ना, तो dq is equal to I dt. Okay, I'm integrating both sides. Here, since dt is a time limit डालने का t1 to t2, and charge is the charge limit डालेंगे q1 to q2. मतलब एक टाइम t1 में चार्ज q1 था, एक टाइम t2 में चार्ज q2 है. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dq इज q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज q2 माइनस q1. ओके, सो देयर इज नथिंग बट डेल्टा q इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 to t2 I dt. Integral t1 to t2 I dt is a formula. Okay, now substitute here. I average है ना, I average का formula is integral t1 to t2 I dt upon change in time is t2 minus t1. This is the formula. I average का general formula you got integral t1 to t2 I dt by t2 minus t1. This is the formula. This is where you can use everywhere. Wherever you ask I average, you can find anywhere this one. Suppose मान लो किसका क्वांटिटी उसका बीच में आएगा I का. Suppose I want, suppose y is the function of time. Suppose any function of time in terms of time is given. Okay. So now y average चाहिए बोले तो क्या करेंगे? Y average का फॉर्मूला टेल में इंटीग्रल t1 to t2, इधर जो y है y का एवरेज लेना, y dt by t2 minus t1. ऐसा करें तो एवरेज वाला आ जाएगा. इट में भी काइनेमेटिक्स में आल्सो वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, एवरेज एक्सेलरेशन, वी कैन यूज दैट फॉर्मूला फ्रॉम दिस थियर. सपोज मान लो पावर चाहिए, सपोज पावर इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम इज देयर. सो हाउ टू गेट p एवरेज? इंटीग्रल जो भी है उसका क्वांटिटी, सो p dt by t2 minus t1. So limits are from t1 to t2. This is the formula. I average first formula you have to by heart. Integral t1 to t2 I dt by t2 minus t1. And you know integration how to do. याद है ना, x power n का x power n plus 1 by n plus 1. दो ही फॉर्मूला याद रखो. That's it. Integral x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Integral dx will be x plus c. If the limits are given, upper limit minus lower limit डालने का, no c will be coming. Okay. फॉर्मूला याद हो गया श्रीराम? इंटीग्रल t1 to t2 I dt by t2 minus t1. एंड समटाइम्स आपको ग्राफ दिया तो इंटीग्रेशन नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? एरिया फाइंड करो एंड सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ दिस वन, यू कैन सब्स्टिट्यूट द एरिया का आंसर t2 minus t1 करने का. ओके, चलो विल डू द क्वेश्चंस नाउ. करो. So I is in the function of time is given. I average in 2 seconds. In 2 seconds means 0 to 2 seconds. So we know the one formula only. I average ka formula. I average is equal to integral t1 to t2 I dt by t2 minus t1. So integral I के जगह में 4t cube plus 2t dt from t1 to t2 में 0 to 2 seconds upon t2 minus t1 is 2 minus 0 is 2. So 10. कितना? 10. यस करेक्ट. आया आपको इंटीग्रेट करने के सेपरेटली 1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर ले लो, टी स्क्वायर टी क्यूब का t पावर 4/4 प्लस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर बाय 2.
from 0 to 2, 0 to 2. 4 4 cancel, 2 2 cancel. So 1/2 into ये कितना होगा? 2 4 4 4 4 8 16 16 minus 0 16 plus 4. So 20/2 is 10 amperes. is answer. क्लियर हमारा है? ओके चलो नो करो. The given graph which is continuously जा रहा है zoom 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 from 0 to t. Okay. I want average current for this one. Average current. तो फॉर्मूला डाला है एवरेज का फॉर्मूला वी लर्न इंटीग्रल t1 to t2 I dt अपॉन t2 minus t1. बट I इन टर्म्स ऑफ टाइम वगैरह नहीं दिया, इक्वेशन नहीं दिया. आई टोल्ड यू इसका इंटीग्रेशन नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ. किसका एरिया फाइंड करेगा? ऑल ट्रायंगल्स का एरिया. इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन में देखो ये साइकिल रिपीट हो रहा है, जूम ये साइकिल रिपीट हो रहा है ऐसा, राइट? नाउ उसके लिए आप एक साइकिल का ले लो, खत्म हो जाएगा. इफ यू फाइंड एरिया अंडर दिस ग्राफ क्लास विल गेट द आंसर. 5 amperes. कितना? 5 ampere. 5 ampere is correct. So area under the graph half into base is time t into height is 10 upon t2 minus t1 is t minus 0 is t. 5 ampere. Area under graph is nothing but this one. Now घर में which current is coming? घर में which current is coming? I told you I is equal to I naught sin omega t is the current is coming. Okay. Even voltage कौन सा आ रहा है? V is equal to V naught sin omega t is the current. I told you AC generator का output only this one. AC generator का output only current का sin omega t आएगा. Okay. Now our intention is to calculate I average for complete cycle. Okay. Complete cycle means आपको टाइम लिमिट्स का कैसे डालेगा? करंट वर्सेस टाइम का. दिस इज साइनसॉइडल वेवफॉर्म राइट. आपको दिस इज 0 t/2 ये वाला t/2 एंड ये वाला t. ए हाफ टाइम ए फुल टाइम. नाउ कंप्लीट साइकिल मींस लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t लेने का. सेम मेथड किसका भी देखो आई इन फंक्शन ऑफ टाइम राइट. आई एवरेज फाइंड करो, देखते करो. आई एवरेज का फॉर्मूला इज इंटीग्रल 0. हाँ वो तो फास्ट में किया था कैसा? आई dt by t2 minus t1. So from we can take from t1 to t2 right. Okay now limits कैसा लेने के? Limits are taking from complete cycle का right, 0 to t लेने का. 0 to t I is I naught sin omega t dt by t2 minus t1. t2 minus t1 is t minus 0 is t. Now integrate करो. I naught कॉमन बाहर आ जाएगा by t. Integration of sign is minus cos right, minus cos omega t. Again differentiation of omega t is omega by omega, integration by omega. From limits are from 0 to t. Okay so बाहर आ जाएगा I naught by omega t माइनस भी बाहर आ जाएगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसमें 0 to कैपिटल टी राइट. हाँ सो ये ओमेगा इज नथिंग बट 2 pi by t. 2 pi by t. So cos 2 pi by t into t upper limit minus lower limit cos 0 omega t is 0. So t cancel. Cos 2 pi cos 2 pi cos 0 is same right. Cos 0 minus cos 0 0. So answer is 0. एवरेज वाला कभी भी 0 आएगा. There is a problem. That's why we are going for RMS. कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू वी कैन नॉट गेट बिकॉज कितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है. That's why it will get cancelled. Average value for complete cycle का it is 0. Now same method में try to calculate for half cycle. करो कितना बोलो. Same method करो, integration करो, but limits are from 0 to t/2 half cycle का.
So 2 I0 by omega t. ओमेगा की जगह में सब्स्टिट्यूट 2 पाई बाय टी. I0 by pi. नो, थोड़ा रॉन्ग है. 4 आई नॉट बाय 2 आएगा नीचे, बिकॉज -1 -2 आएगा. Two I naught by pi, right? 2 आई नॉट बाय 5. सेम आपको लिमिट डालने का फ्रॉम 0 to t/2. सो आई नॉट साइन ओमेगा टी Got dt by t2 minus t1. t2 minus t1 is t/2. This is average. Now if you solve, you will get the value. I average will be 2 by pi I naught. And this average value is only for what? Average for only for when I equal I naught sin omega t. If they given different thing, different आएगा आंसर. मेथड तो सेम है. ओके, बट हमारे पोर्शन में ज्यादा साइन वाला आएगा. ओके, साइन और कॉस का भी सेम आएगा. 2 by pi I naught. ओके, चलो. नाउ वी कैन कंक्लूड दिस वन. देखो, if I equal to I naught sin omega t, I average for full cycle is 0. I average for half cycle is 2 by pi I naught. Now same way, if V equal to V naught sin omega t, full cycle is 0 and V average is 2 by pi V naught. This is the formula. लिखो. बेटा, 1 minute. Okay, चलो. Now that's why we are going for RMS value. RMS value कैसे करेंगे देखो. RMS means root mean square velocity. root mean square velocity. Okay, so कैसे करने का RMS का देखो. IRMS का. So even though it is root mean square velocity, will go from backwards. टिंग टिंग ऐसे backwards जाएंगे. Okay, so first current को square करो. ऐसे square, right? Then mean is nothing but average करो. And then root करो. Root खत्म. This is the way we have to do. First square, mean, root इस करने का. Okay, and RMS value को other names are given. That is also important. Effective value, virtual value ऐसे बोलेगा. Effective value, virtual value ऐसे बोलेगा. Okay, चलो. Now same thing, IRMS we have to find for I equal to I naught sin omega t, right? For complete cycle, RMS generally we are going for complete cycle only. Whenever they ask RMS, unless I mention complete cycle का we are trying to find. That is a problem, right? For us, average का 0 आ जा रहा है. RMS will go. Okay. So क्या करेंगे RMS का? I equal to I naught sin omega t का. First IRMS how to find?
सो पहले स्क्वेयर करेंगे करंट को, बाद में मीन करेंगे, रूट करेंगे. सो फर्स्ट हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा, सो दैट रूट निकल जाएगा ना. सो आई स्क्वेयर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एवरेज, राइट. हाँ, नो हाउ टू फाइंड नो आई स्क्वेयर आर एम एस का, इसका कैसा आएगा एवरेज का, स्क्वेयर एवरेज आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो एवरेज वैल्यू ऑफ इसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल कंप्लीट साइकिल इज फ्रॉम 0 to t, आई स्क्वेयर है ना, आई स्क्वेयर डी टी बाई टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन. सो आई स्क्वेयर का एवरेज मीन्स आई स्क्वेयर डालने का, पी स्क्वेयर मीन्स पी स्क्वेयर डालने का, उसका एवरेज. नाउ इंटीग्रल 0 to t, आई स्क्वेयर मीन्स इसका स्क्वेयर किया तो आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी बाई टी, राइट. सो इसका फर्दर इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. इसको पूरा सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर एज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, खत्म. इज अ फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेन एवर दे गिव द क्वेश्चन में, याद रखो वेन एवर दे गिवन क्वेश्चन में वोल्टेज होने दो और करंट होने दो, दे गिवन, दे डोंट मेंशन मींस दैट इज नथिंग बट आरएमएस ओनली. वी शुड टेक आरएमएस वैल्यू ओनली. समटाइम पीक वैल्यू चाहे बोल दो, सिंपली आपको यूज करने का इंटू रूट टू किया था आ जाएगा. आई आर एम एस इज इक्वल आई नॉट बाई रूट टू. ओके, चलो नाउ बेटा. सो इसका पूरा इंटीग्रेशन करके उसको साइन स्क्वायर आई लगा के सॉल्व करने के बाद ऐसा आएगा आई नॉट बाई रूट. मतलब ये स्क्वेयर उधर भेज जाएगा ना, लास्ट में रूट आ जाएगा. ओके, चलो नाउ इसका कंक्लूजन लिख लो सिंपली. I is equal to I naught sin over t, I RMS is I naught by root 2, and I average for half cycle is 2 by pi I naught. And similarly, V average for half cycle is 2 by pi V naught. And full cycle का 0, right? I average for full cycle 0. I average V average for full cycle equal 0. खत्म. No questions करेंगे. I told you when whatever the voltage they given, that is nothing but RMS voltage only. बैठ कर दिया. Should I ask? हाँ सात्विक आ जाएगा, आ गया फॉर्मुलास. हाँ शिवंगी बोलो, ट्राई करो. आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2 by pi I naught. ओके, फॉर फुल साइकिल 0. एंड आई आर एम एस एंड आई नॉट का रिलेशनशिप I naught by root 2 is equal to IRMS. आई आर एम एस. चलो उसका क्वेश्चंस करेंगे अभी पूरा. ओके चलो. We know that household AC voltage is 220 volts. Whether 220 volts a peak का average या RMS का. What are the voltage they given? There is nothing but RMS only. Whenever don't mention, there is RMS only. So V RMS is 220. Now find V naught. Peak voltage find करो. Maximum voltage और peak voltage find करो. So VRMS is given. Peak voltage find करो बोलते, we have a relation, right? What is the formula? VRMS is equal to V naught by root 2. So therefore, V naught is equal to 220 root 2 volts. Okay. Suppose, see this current I is equal to I naught sin omega t, right? This is a current which is getting for our home. What is I is called as?
Here I is called as current mat bolo. I naught is peak current, right? I is called instantaneous current. Why instantaneous current? Because as omega t angle changes, we can find the current. So at the at this angle may you can find the current, at this time may you can find the current, so we can calculate. Similarly, V is equal to V naught sin omega t. V is called instantaneous voltage. Very important. If they ask simply find instantaneous voltage means आपको V is equal to V naught sin omega t. V naught separately find करने का substitute here, you'll get the answer. So this is called instantaneous current, instantaneous voltage. चलो. Okay. Electric mains or house are marked as 220 volts 50 hertz. Write down the equation for instantaneous voltage. I want instantaneous voltage. So the voltage which is given is nothing but the RMS voltage. Since he is asking instantaneous voltage, what is the formula? V naught sin omega t. Frequency also given. Frequency and omega क्या relationship मालूम है ना? Frequency and omega. Omega is equal to 2 pi f. Use करके substitute in this complete expression में, this is the answer. 220 sin 100 pi t. 220 sin 100 pi t, wrong. Here V naught and VRMS same only. Convert करो. VRMS V naught का. Two 220 root 2 sin 100 pi t. 220 root 2 Sin 100 pi t. t. Yes. See, we know VRMS is equal to V naught by root 2. V naught is equal to 220 root 2. 220 root 2 sin omega is 2 pi f, right? So 2 into pi into f is nothing but frequency 50 into t. So this is 100 pi. Yeah, sure. Chalo. Now, the peak value of alternate voltage is much. Resistance is given. Voltage is given. Find RMS current. Try karo. Ohm's law is always valid. Ohm's law किधर भी use कर सकते हैं. So he only mentioned peak value of the alternating voltage at 50 ohms resistance. Peak value, मतलब V naught is given as 10 volts. And resistance is given as 50 ohms. He's asking IRMS is how much? 1 by 5 root 2. 1 by 5 root 2. 5 root 2. No. Maybe. Correct only. Yeah. Yes. Which formula you use? Tell me. IRMS means? I by root 2 and V by I by root 2 means I कौन सा है? I RMS you telling I not कौन सा? No, so V by R will give I, and then that I by root 2 will give IRMS. V naught by R you done, na? Yeah. It is I naught you will get. I naught you will get. And then you divide that by root 2. Yes. देखो, we can use this also. We know this formula normally. I naught is equal to V naught by R. Right? Peak value by resistance. This is Ohm's law. V equal to IR, I equal to V by R. This is also true always. IRMS is equal to VRMS by R. Okay, directly you can use. Okay. So VRMS कैसा आएगा? 10 by root 2, right? This is RMS, right? By 50. By resistance is 50. VRMS equal V naught by root 2. V naught is 10 by root 2, right? So it is nothing but 1 by 5 root 2 amperes. So wherever naught is there, peak value is there, and RMS is always true. ऐसा भी कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? Okay. And I naught means मालूम है ना current का? This is nothing but I naught. This maximum value को I naught बोलते हैं. Voltage का भी same. This value को we call as V naught.
ओके चलो ना करो. Effective value of current. So effective value means nothing but RMS value. So the given IRMS is 5 ampere. Frequency is 50 hertz. What is the peak current? I naught is how much? And mean value of current over half of a cycle. मतलब I average, mean is nothing but I average per half cycle I want. Half cycle. And value of current at this one is important. देखते हैं, who will do? श्रीराम, I naught आ गया. I naught is how much? Tell me. pi root 2. So I root pi root 2. Yeah, pi root 2 is the answer for RAM. Because IRMS is I naught by root 2. So multiply किया तो I naught आ जाएगा. Okay. Average cycle का half average, half cycle का. You know the formula, right? I average per half cycle is 2 by pi I naught. So कितना होगा? 2 by pi into I naught is 5 root 2. So it is 10 root 2 by pi. ये आ गया. This is amperes, right? And now ये क्या है? The value of current at 1 by 300 seconds after it was 0. मतलब देखो करंट तो ये हमेशा चेंज होता जा रहा है, जुम 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 बोल चेंज आ रहा है. मुझे आफ्टर 0 के बाद ये टाइम t इज इक्वल टू 1 by 300 सेकंड में मे बी हियर 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 एनीवेयर करंट इज हाउ मच इज आस्किंग. मतलब इनडायरेक्टली इज आस्किंग दिस इज इंस्टेंटेनियस टाइम. एट दैट इंस्टेंट टाइम में करंट कितना है. सो वी कैन यूज इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला यूज करो. I is equal to I naught sin omega t. This small t is nothing but 1 by 300. Choose karo and solve. Omega is 2 pi f. F is given as 50 hertz. 5 root 6 by 2. 5 root 6 by 2. Yes, correct. Perfect. So I naught already got 10 root 2 by pi sin 2 pi f. 100 pi into t is nothing but 1 by 300 seconds. That's why it is called instantaneous current. I is called instantaneous current. Q, this one, because of this one. So pi by 3. Pi by 3 is nothing but how much? 60. Yeah? 60 root 3 by 2. So 10 root 2 by pi into root 3 by 2. So it is 5. So it is 5 root 6 by pi amperes. That's why it's called instantaneous current. Every time में कितना भी seconds में मुझे current चाहिए बोलते हैं, we can calculate by using this expression. Okay. So won't I not be 5 root 2? You've taken I not to be the half cycle average current. Okay. 5 root 2, right? Sorry. So कितना होगा? So it is 5 root 2. 2 भी cancel नहीं होगा ना? So it is 5 root 2, right? So 5 root 2 pi नहीं है ना? Yes or no pi? And sin 60 root 3 by 2. So कितना? 5 root 6 by 2, right? Amperes. चलो next.
So ऐसा मेथड तो सेम है, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन था डिफरेंट. चलो कर देखते हैं. The peak value of the alternating current frequency, peak value only he told. मतलब I naught is given as 14.14 amperes. Frequency is given as 50 hertz. Find the IRMS. And how much time the current takes in reaching from 0 to maximum. कितना time लगेगा in order to reach the current from 0 से maximum तक reach होने के लिए. What is the, we have to find the time. कितना time लगेगा. IRMS so easy है ना. I naught by root 2. So 14.14 by root 2. Root 2 is 1.414. So answer कितना होगा? If you done into 10 in 10 किया तो, so 9 कितना 10 ampere right? By 10 किया तो हो जाएगा ना, by 100. हाँ. So कितना आएगा? Now I want the how much time will the current takes in reaching from 0 to maximum. 5 into 10 power minus 3 seconds. Good, very good. हाँ. हाँ देख बोलो. The current taking the reaching from 0 to maximum value. ये पूरा before you done ना और now only doing ना. हाँ. सात्विक का डाउट है, मेरा नहीं. सात्विक बोलो. हाँ, 0 to maximum reach होने के लिए कितना टाइम लगेगा? See, you tell me a normal cycle में I told you 0 t by 2 t right? ये कितना होगा? t by 4 right? So कितना टाइम लगा to reach from 0 to maximum? t by 4. And t is nothing but 1 by f right? So 1 by 4f. So 1 by 4 into frequency of 50. So it is 1 by 200. So 2 into, so 0.5 right? So 0.5 into 10 power minus 2. So कितना होगा? 5 into 10 to power minus 3 I can put. So 5 milliamp current time है ना, seconds. 5 milliseconds लगेगा to reach the t by 4 seconds. चलो करो अभी क्वेश्चंस करो. I is equal to I naught sin 100 pi t. Calculate the mean value of AC over positive half cycle and RMS value of the current. Mean means I average, right? I average per half cycle. Hundred by pi and 50 by root 2. 50 by root 2. दूसरा 100 pi. 100 by pi. Yes. 100 by pi. Okay. See here I is equal to I naught sin omega t, right? So comparison में I naught is 50 and omega is nothing but 100 pi. You can use that one and solve. आ जाएगा. आया? आ जाएगा आपको भी? श्याम डाउट है इसमें? तो मैं ओके नेक्स्ट करो. See AC ammeter को we call as hot wire ammeter. Ordinary moving coil ammeter को normal ammeter बोलते हैं उसको normally. AC ammeter को we can call hot wire ammeter बोलते हैं. See AC current ammeter measures what? Which current? I not a I RMS a AC current measures. हमारा जो instrument AC का है ना, that will measure what? It measures I RMS. Okay, so that means whenever you tell to find the AC ammeter में wire को find करो तो IRMS you have to find. And ordinary वाला average value only will get. Average value is how much? For common complete cycle is 0. So in the ordinary moving coil, this one because sin theta right, sin का
it will measure always value. So sine ka always the current is 0. Okay, that's why if I put DC ammeter हमारे घर में जो भी लगाएगा ना, it will not show 0 voltage दिखेगा. अरे क्या हो गया खराब हो गया बोल के लगेगा. बट AC का AC only we have to put. ओके हाँ, इसका फाइंड करो, IRMS फाइंड करो, इसका हो जाएगा 3/√2. 3/√2. यस, IRMS is equal to I0/√2. उसको करने दो. I0 is out if I substitute I0, then only we'll get IRMS, right? I0 is E0/R. So E0 is कितना है? 60. Because E equal to E0 sin omega t, right? 60/R is how much? 20 ohms. So it is 3. So here IRMS therefore you got as 3/√2 amperes. I assume. So कभी याद रखो, AC ammeter measures RMS and normally ammeter measures average value. Okay, so complete cycle के average value is always 0. So they didn't ask for the complete cycle in the previous question, right? नहीं कभी भी, मतलब ये साइन वेव है ना, Right. साइन वेव का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल का आएगा. पीरियोडिक वेव फॉर्म है ना, 1 पीरियड का आएगा, टाइम पीरियड ऊपर नीचे वाला दोनों का. नॉर्मल मेजर दैट्स व्हाई डीसी एमीटर में कभी भी एवरेज आपको करंट विल नॉट शो, इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. ओके हाँ, नो करो. he has given the electric current in the circuit is I is equal to I0 into T /tau. This is given to you for some time. Well, general current is not sin omega t. He is telling calculate the RMS current for a period of 0 to tau. I want RMS value. I want IRMS चाहिए. We can't use IRMS which I0/√2 वगैरह नहीं है, because it is not I equal to I0 sin omega t. So क्या करेंगे? We have our method, right? What is the method? IRMS कैसा आएगा? पहले स्क्वायर करो, बाद में मीन करो एंड बाद में रूट करो. सो IRMS आने के लिए फर्स्ट आपको स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स करो. IRMS स्क्वायर, I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I स्क्वायर का एवरेज फाइंड करनी. I स्क्वायर का एवरेज. ओके, नाउ I स्क्वायर का एवरेज वैल्यू भी जनरल फॉर्मूला याद है ना? I एवरेज, व्हाट इज फॉर्मूला? T1 to T2. T1 is 0 to tau. I स्क्वायर का एवरेज है ना, I स्क्वायर का एवरेज है ना, सो I स्क्वायर dt by T2 minus T1 is tau minus 0. I स्क्वायर कितना है उसका, राइट, जो है वो डालेंगे. इंटीग्रल 0 to tau. I स्क्वायर मीन्स I0 स्क्वायर T स्क्वायर by tau स्क्वायर, राइट. दिस इज द करंट स्क्वायर किया, dt अपॉन tau. नो सॉल्व एंड फाइंड द आंसर. आने के बाद आपको क्या करेंगे, IRMS है ना, ये स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट आ जाएगा. नो क्या क्या बाहर आ जाएगा? I0 स्क्वायर by tau square and tau is tau cube, and limits are from t integration t square, right? T cube by 3, limits are from 0 to tau. So I0 square by 3 I0 tau cube, right? I0 tau cube by 3 tau cube, right? Upper limit minus lower limit, so tau cube 3 बाहर आ जाएगा. Okay, now tau cube tau 2 cancel. I0 square by 3, but I square RMS is I0 square by 3, therefore IRMS is कितना? I0/√3. Okay, whenever they given like normal method में any current, you have to go for normal method. नहीं तो you have to go for our basic method. Basic formula तो आ गया ना, that formula you can use. See, understood? It is easy question. Now we'll use some shortcuts. Learn करेंगे. Tricks to find RMS and average value and AC circuit का we are studying the purely resistance circuit next part में. Okay, so tricks to find RMS and average value is important. Shortcuts we are learning. अभी normal current तो आपको integration करके करना है ना. Without integration also sometimes we can do it directly.
how to find I average, and we'll see. कैसे. So what is the tricks to find short track for complete cycle का we are seeing 0 to t. Okay, sin omega t का average for complete cycle is 0. You have to use bar का कभी भी 0. Cos omega t का average for complete cycle is 0. And sin square omega t का average will be half. बैड करना पड़ेगा इसका शॉर्टकट से. ओके, cos स्क्वेयर का ओमेगा टी का एवरेज इज हाफ. सो sin स्क्वेयर cos स्क्वेयर का एवरेज 1/2. ओके, ऑलवेज इवन फॉर हाफ साइकिल आल्सो सेम थिंग ओनली. ओके, फॉर 0 to t/2. नो इसका कैसा होगा एवरेज फॉर हाफ साइकिल का. sin ओमेगा टी का एवरेज विल बी 2/pi. cos omega t का average is 2/pi. and sin square का square omega t का average is 1/2. cos square omega t का average is 1/2. This is the formula you have to learn. Now ये formula यूज करके shortcut we are trying to find many questions का. आ गया ना फॉर्मूला. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में 1/2, रिमेनिंग वाला 0 आएगा. इसका 2/pi. ओके, चलो नाउ एक एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी मालूम है उसका याद करेंगे. I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी का. आई वांट टू फाइंड I एवरेज फॉर हाफ साइकिल, I RMS फॉर इसका हाफ साइकिल फुल साइकिल का चाहिए. राइट. हाँ, टेल में कितना आएगा असल एक्चुअली देखेंगे. I एवरेज फॉर फुल साइकिल करेंगे. ओके, सो I एवरेज मींस आई टोल्ड यू आई बार करेंगे. आई एवरेज नथिंग बट आई बार. राइट. हाँ, आई बार मीन्स पूरा बार करो. आई नॉट साइन ओमेगा टी का बार का. आई एम टॉकिंग अबाउट फुल साइकिल का. सो कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू इज कांस्टेंट ओनली आई नॉट. एंड साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज 0. आई नॉट इज 0 इज 0. देखो वन स्टेप में आ गया. नहीं तो क्या करता था, इंटीग्रेट करके 0 to t/2 करके सॉल्व करता था, बट वन स्टेप में आ जाएगा. नो आई आरएमएस का आई टोल्ड यू. आई आरएमएस कैसे फाइंड करेंगे. फर्स्ट स्क्वेयर करो, मीन करो, रूट करो. तो अंडर रूट आई स्क्वेयर मीन्स इसका स्क्वेयर करने का आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू. राइट. आई नॉट स्क्वेयर का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू आई नॉट स्क्वेयर ओनली इनटू साइन स्क्वेयर का एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज हाउ मच. साइन स्क्वेयर का 1/2. स्क्वेयर इज 1/2. राइट. 1/2. सो आई नॉट बाई रूट 2 विच वी ऑलरेडी नो. घर का करंट का कभी भी आई नॉट बाई रूट 2 स्टेप में आ जाएगा पूरा. विदाउट इंटीग्रेशन डायरेक्टली करेंगे. नेक्स्ट क्या करो. देखो अभी आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी. I want simply RMS, IRMS. So you should shortcut IRMS is equal to पहले स्क्वेयर करेंगे, मीन करेंगे, रूट करेंगे. सो अंडर रूट आई स्क्वेयर मीन्स इस टोटल का स्क्वेयर करने का आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वेयर बार. ओके, सो स्क्वेयर करें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 2 आई नॉट स्क्वेयर साइन ओमेगा टी का एंड सभी का एवरेज. सो आई एम सेपरेटिंग एवरेज का. एंड बार का तो आपको मालूम है आई नॉट स्क्वेयर क्या कांस्टेंट इज आई नॉट स्क्वेयर प्लस आई नॉट स्क्वेयर का आई नॉट स्क्वेयर ओनली साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फुल साइकिल का 1/2. हाफ साइकिल भी 1/2 ओनली. सो 2 आई नॉट स्क्वेयर बाहर आ जाएगा. एंड साइंस ओमेगा टी का एवरेज फुल साइकिल इज हाउ मच. साइन ओमेगा टी का फुल साइकिल इज इट इज 0. राइट. एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी का फुल साइकिल का नाउ कितना होगा. अंडर रूट 2 आई नॉट स्क्वेयर प्लस आई नॉट स्क्वेयर 3 आई नॉट स्क्वेयर बाई 2. सो कितना होगा. सो आई नॉट इंटू रूट 3/2 amperes. This is the average value. The complete RMS value of this one.
ओके समझ आ रहा है? एंड आपको दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, सपोज मान लो साइन 2 ओमेगा टी है सपोज, और 3 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, इसका एवरेज विल भी कैसा? हाउ टू फाइंड एवरेज वैल्यू? साइन ओमेगा टी का कितना है? 2 ओमेगा टी भी उतना ही है फुल साइकिल का। सपोज फुल साइकिल का साइन ओमेगा टी 0, राइट? साइन 2 ओमेगा टी आल्सो 0, 3 ओमेगा टी आल्सो 0, ऐसा साइकिल रिपीट होगा ना, उसका एवरेज वैल्यू तो 0 है फुल साइकिल का। ओके समझ रहे? और एक क्वेश्चन करो, I1 इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, फाइंड करो उसका IRMS। आई वांट IRMS इज, पहले स्क्वायर करेंगे I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी का स्क्वायर, बाद में मीन एंड बाद में रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2I1 I2 cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी। ओके इसका एवरेज, ओके देखो 2 sin a cos b, सो फॉर्मूला याद है ना, sin 2 थीटा, राइट? sin a 2 sin a cos a, sin 2 ओमेगा टी, उसका एवरेज वैल्यू 0, राइट? फुल साइकिल का इट इज 0, ओके बिकॉज RMS ऑलवेज फुल साइकिल ओनली टॉकिंग अबाउट। ओके सो अंडर रूट I1 स्क्वायर कांस्टेंट है, I1 स्क्वायर cos स्क्वायर का ओमेगा टी का 1/2 प्लस I2 स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू I2 स्क्वायर एंड sin स्क्वायर का 1/2। ये तो 0 है, याद है ना, समझ में है 0 क्यों है? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, सो आंसर इज I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिस्टेंस सर्क्यूट, RL सर्क्यूट पूरा सॉल्व करने वाला है।